होगी बात। घर पे सब ठीक? ऑल गुड। नाइस। तबीयत ठीक है सबकी? सब सही है। सारे कोविड के चक्कर में बस टेंशन में है कि अंदर अंदर रहना है, राइट? दिस टाइम सक्स। आई नो। Totally. एंड देन हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ, ट्रैवलिंग इज सो फार. So, I was reading that parents and grandparents sponsorship program is back again for 2020 and it's starting from October 13 to November 3rd, जिसमें कि आप अपनी रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो. हाँ, वो आई थिंक प्रोसेस वही होगा सेम जो लास्ट टाइम हुआ था. कि इस पर्टिकुलर 1 वीक में यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट कि हम पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं. सारी एप्लीकेशन जो हैं वो एक पूल में चली जाती हैं और उसके बाद वो लोग ड्रॉ निकालते हैं. मैंने पढ़ा था इस बार 10,000 एप्लीकेशन दे आर एक्सेप्टिंग. सो मे बी जो लकी होते हैं उनके लिए उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और उनको इन्विटेशन आ जाता है टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स. आई वाज थिंकिंग इस बार ही हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं क्या दूसरे पेरेंट्स के लिए? डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन ही भरनी होती है तो एटलीस्ट एट दिस पॉइंट लेट्स जस्ट पुट नेम्स एंड देन विल सी कि ड्रॉ में नंबर आता है कि नहीं आता. So I was not involved that time because I was busy with Ashya. How did we submit the application that time? So what we did is कि हमने 2018 में सबमिट किया था. ऐसे ही 1 वीक का टाइम हमें मिला था जिसमें हमने दोनों साइड इंफॉर्मेशन हमने दी थी. एंड देन लकीली आई थिंक इन द थर्ड राउंड ऑफ ड्रॉज I got an email saying that we got selected and if we are eligible we should submit our documents within 60 days. Talking about the eligibility, who is eligible to sponsor their parents or grandparents? लास्ट टाइम जब हमने किया था तो देर इज़ लाइक अ मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन योर फैमिली साइज एंड हाउ मेनी पीपल यू आर वाना स्पॉन्सर. से फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों मदर एंड फादर दोनों को स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड देन से वी आर 2 एंड नाउ वी हैव आल्सो वर्षा सो वी आर लाइक 5 पीपल इन द फैमिली. उसके बेस पे उनके CIC की वेबसाइट पे एक टेबल है कि आपकी इनकम रिक्वायरमेंट क्या है, फैमिली इनकम की रिक्वायरमेंट क्या है. और इस बार बल्कि मैं पढ़ रहा था कि बिकॉज ऑफ कोविड सिंस काफ़ी लोगों की जॉब चली गई हैं तो उन्होंने रिक्वायरमेंट थोड़ी कम कर दी है 2019 की. In the sense क्योंकि people lost their job and then the income is not the same for everyone. So that dollar amount is less as compared to previous years. And then you need to be a PR or Canadian citizen. They most of the time they need three tax return files. On that is the basis they calculate कि आपकी सैलरी क्या थी और आपने रिटर्न फाइल की हुई नहीं हुई. So having your return files for 3 years consecutive years is very important. So that means अगर आपकी PR लग गई है और अभी आप कनाडा में नहीं आए हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते हैं. Is that correct? Exactly. You have to be a resident of Canada for 3 years at least. So and you have to file your taxes for the 3 years as well. And what about if you are on a work permit? Can you? No, you can't do that. Not on work permits. It's only for permanent residents and Canadian citizens. Okay. Do you remember हमने क्या documents लगाए थे that time? Yeah, documents के केस में it is actually much easier than applying for a super visa or visitor visa. Oh my God, I remember उसमें कितने documents और कितना financial status दिखाना पड़ता है. It's such a big hassle, right? Applying for a visa, super visa or a visitor visa for Canada is one of the hardest. The amount of documents that you needed, it is super difficult and there are a lot of documents. It's actually tougher than United States. गुड थिंग इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो स्पॉन्सर के लगते हैं. से फॉर एग्जांपल इन आवर केस हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. तो इट्स मच ईजियर टू कलेक्ट दोज डॉक्यूमेंट्स बिकॉज पेरेंट्स से डॉक्यूमेंट्स अरेंज कराना इज अनदर डिफिकल्ट टास्क. सो एज फार एज रिमेंबर कि हमारी डिटेल्स जो थी वो दोनों की गई थी. फॉर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी वो फॉर्म से ही जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसी से दे विल डिटरमाइन कि आप लोग ने लास्ट 3 इयर्स की टैक्स भरी है और वो इनकम जो है अपने आप वो CRA से पुल कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टू एंटर आवर सोशल इंश्योरेंस नंबर देयर. सो वी डोंट हैव टू सप्लाई पे स्टब्स और थिंग्स लाइक दैट. So guys, if you know Deepak, you probably know that thing about him. He's expert in applying for all the work permits.
बिकॉज दीपक ने मेरा अप्लाई किया, फिर हम दोनों का अप्लाई किया, पीआर अप्लाई किया, पेरेंट्स का सुपर वीजा अप्लाई किया, टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, एंड ही हैज हेल्प्ड सो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स अप्लाइंग द सेम फॉर देम. तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि अगर आप इस प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं तो यू विल गेट टू नो इजीली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. एंड CIC की वेबसाइट में दे मेड इट रियली वेरी इजी. दे गिव यू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली व्हाट यू नीडेड, एंड देयर आर डिफरेंट forums as well that you can go and refer to, and I think that's what we followed too. But we have applied a lot of permits and permanent Oh my residence God. and visas, and Let's not even go there. I think we probably have spent $10,000 For sure on that. on Oh my all God. these permits, and that's the story for most of the immigrants actually. टॉकिंग फर्दर अबाउट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बिकॉज अगर पेरेंट्स की साइड से कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वी शुड लेट देम नो इन एडवांस, राइट, ताकि वो तैयारी कर सके उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने की. Right, based on the requirements जो last time थी, most of the documents जो थे वो हमारी साइट में लगते हैं, स्पॉन्सर की साइट में लगते हैं. जैसे कि हमारी PR कार्ड की कॉपी लगी थी. राइट. There's one more important thing. मेरा birth certificate लगा था. So if you don't have a birth certificate, get it arranged because that is really very important. उसके अलावा बेसिकली फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं और जो फॉर्म्स में डिटेल्स होती हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बात करते हैं पेरेंट्स की साइड में, तो पेरेंट्स की साइड में भी कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगते हैं अपार्ट फ्रॉम जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरनी है उनकी फ़ोटोग्राफ्स के. द इम्पॉर्टेंट थिंग विच नीड टू बी डन इज़ मैरिज सर्टिफिकेट. एंड आई नो दैट्स अ पेन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई होप यू एग्री कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, इंस्टेड दे हैव टू अरेंज फॉर एफिडेविट. एग्जैक्टली. And it may take a while. I remember with your parents, it took us a long time to arrange one affidavit, right? Yeah, so affidavit is an option if you don't have the marriage certificate. And later on, जब सब कुछ approve हो जाता है, then they ask you to get the medicals done. Is she crying? नहीं. हाँ, हमारे कान बजते रहते हैं. Actually हमें ऐसा लगता रहता है कि बच्चा रो रहा है, क्योंकि पूरे टाइम अगर वो रोती भी है ना तो हमें लगता है कि रात को भी लगता है कि वो रो रही है क्या. जाग जाए, फिर हमें पंपकिन फार्म भी तो जाना है. Oh, exactly. Looks like it's gonna rain though. So now because मैं 18 मंथ से काम नहीं कर रही हूँ, right? It was only one source of income in our family. Exactly. अगर हम अपने अब सेकेंड सेट ऑफ पेरेंट्स की फाइल लगाते हैं, would you think how much it's gonna impact considering we just have one source of income? And I'm probably sure कि आप में से काफ़ी के साथ भी सेम सिनेरियो है कि only one person is earning for now and you want to apply for the sponsorship. I think in that case what can happen कि now because if we want to sponsor your side of parents then you have to be a primary sponsor. But I'm not earning from 18 months. But good thing is that and then end of a day your household income matters. So you can be a co-signer. I will be a co-signer anyways. Okay. Right? But there is one more complication here because I already sponsored my parents. I think now our household number members have been increased by 2. So that means already 5? Yes, so we are 5 members already. And if we want to invite 2 more parents, so there will be like 7. So अब जो bracket है income का, अब वो बढ़ गया है. And on top of that, if you were not working for that year, so that means हमारी income कम है. So it will be a little tricky for us. So now let's talk about, I was thinking, does it make sense to apply for second set of parents? आई थिंक सेम हमारा डाउट पे था जब हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था अपने पेरेंट्स के लिए कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स फॉर गेटिंग इनटू दिस एप्लीकेशन. ओके, सो प्रॉज में जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट थिंग इज दैट योर पेरेंट्स विल गेट अ परमानेंट स्टेटस इंस्टेड ऑफ टेम्परेरी स्टेटस. But what we realized कि ये sponsorship is good for parents if they want to come and stay with you for longer time period. So second advantage is कि since because they are getting a permanent status, so at the same time they will get a provincial healthcare system as well. Even though Ontario में there is a wait time of 3 months. So if they come here for the 3 months, they won't have the provincial healthcare insurance, which is free. Right, they still have to buy insurance for that time, but after that they will get it. So after that, whenever they are coming to Canada, you don't have to buy the health insurance for them. So which can get actually very expensive if your parents are staying for a longer time and they are over the age of 60 years. Or even if they have pre-existing disease. That is another problem too.
So, and the third advantage is again connected to permanent residence, that if in the future if they want to apply for Canadian citizenship, then they will get eligible for that, considering if they satisfy all the requirements, number of days staying in Canada. So just to be clear, even if your parents now get a PR, they won't be eligible to get benefits from the government, which is why the government get you sign the document that you are whole sole responsible for their expense in Canada, and which being the reason they look for overall family income. Another thing I was reading, if your parents get a PR, they can stay here with you on a stretch for up to 5 years. However, if they are on a tourist or super visa, they can stay with you up to 2 years, and you can extend their stay for maximum 1 more years only. So ye to hi pros. How about the cons? I think the first thing is that it will cost you a lot of money compared to applying for a super visa, because it costs around $2,000 versus super visa is like $100 or something for $200 for 2 people, right? And then super visa you get it for 10 years. And this will be for 5 years. This will be 5 years, okay? Even normal visitor visa also you get it for 10 years. So say if your parents don't want to visit here, they don't want to stay here for longer time, I think applying for a PR is not a very good option. I think super visa or a normal visitor visa is good enough. The only thing you have to do is to make sure you buy the health insurance. Right. So guys, if you are also interested in inviting your parents in Canada on a PR, make sure October 13 to November 3rd is the timeline in which you can apply. We are gonna share the link of CIC in description box below that you can refer for more information. Normally हम लोग ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं related to immigration because we think that everyone has his different scenarios, and CIC on the website is very self-explanatory, but this is a thing we thought कि हम लोगों ने करनी है, तो we should share our experience with you guys. Applying for any kind of visas or permit in Canada is pretty straightforward. सारी information as Deepak said CIC की website पे available है, so don't fall into a trap of agents. शेयरिंग आर एक्सपीरियंस, मेरे ब्रदर को इनफैक्ट 1 नहीं 2 नहीं 3 एजेंट्स ने सेम बात एडवाइस करी है कि आपकी बहन का वहाँ पे एक स्टेटस है, यू जस्ट गो ऑन अ विजिटर वीज़ा और वहाँ जाके आपको ईजिली वर्क परमिट मिल जाएगा. वेल दैट डजंट स्टैंड ट्रू. अगर आपका भी कोई एजेंट आपको ऐसी गलत एडवाइस दे रहा है, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपका एजेंट देता है, यू कैन डबल चेक इट बाय गोइंग ऑन CIC वेबसाइट. Yeah, we have seen a lot of people that they get misinformation from a lot of different agents. We are not saying that all agents are bad, especially यहाँ पर जो agents होते हैं, they are all registered agents, so they can never give you false information. But people sitting in countries outside of Canada, they can actually misguide you very easily and to make extra money. अब भोग डाले, मेरा पानी भी सारा खत्म हो गया है. Actually, weather भी बहुत अच्छा हो गया है, तो actually we should go out and go to I'm gonna wake up Arshia. Let's go out. आज हम जा रहे हैं pumpkin farm पे. Yeah.